Okay, so I found a video, and this one is called The Harsh Reality of Perfection, and it's featuring Amir Khan. Amir Khan, if you don't know, he's not the boxer from UK, same name. He's actually one of the biggest stars in Bollywood right now, which is the Indian cinema. So let's begin. देखिए इंडिया में कई फेमस एक्टर्स हैं, टैलेंटेड एक्टर्स हैं, लेकिन एक ही एक्टर है जिन्हें परफेक्शनिस्ट कहा जाता है। अब आप सब जानते हैं कि आमिर सर को लोग He's just saying there's one actor in India that's called the Perfectionist, and this guy, he's very big comedian. His name's Kapil Sharma, and he's got one of the biggest shows. I don't know if it's still on TV, called the Kapil Sharma Show, named after him. परफेक्शनिस्ट बोलते हैं। आमिर की बात ही कुछ और, जो पूरी दुनिया जानती है कि he is a perfectionist. For him has to be perfect. Okay, so if these people probably look ordinary to anyone, but they're actually like they're very famous stars in Bollywood. He's a genius, and I also always say that Amir is just a genius. Amir Khan को Mr. Perfectionist भी Okay, that's him. If you didn't know, you've probably never seen him before. कहा जाता है। आमिर के साथ परफेक्ट चीज चलती है। आमिर खान को अपने जनरेशन का सबसे फाइनेस्ट एक्टर माना जाता है। इनफैक्ट आदित्य धार के पहले पीक डिटेलिंग के लिए आमिर खान को ही क्रेडिट दिया जाता था, और अपनी इमेंस सक्सेस के बाद इन्होंने अपना एक प्रोडक्शन हाउस भी लॉन्च किया था, जिसके लिए लोग बहुत एक्साइटेड थे कि अब मिस्टर परफेक्शनिस्ट मूवी के स्टार्ट टू फिनिश के प्रोसेस को कंट्रोल कर सकते हैं। तो देखते हैं कितनी Okay, so he made his own production company, and I guess that gave him control over movies if he was going to make any, rather than some other production studio who can dibble dabble into or talking you out of something. इनोवेटिव और क्रिएटिव फिल्में ये बनाएंगे, और उनके प्रोडक्शन हाउस की लेटेस्ट फिल्म निकल के आई है अपने बेटे जुनैद खान को लॉन्च करने की व्हीकल एक दिन। So he his studio, he's put his son in a movie, so I guess it's like a nepo baby in that sense, because it's launching his son's career. Now this is like the double-edged sword, where sometimes some of the kids are talented and they take after their parents, and some of them not so much, and they're all hot air without any substance. किस्मत की घंटी है सर, फॉर्चून बेल। दुनिया भर से हारे हुए आशिक इसे बजाकर अपनी किस्मत आजमाते हैं, शायद उनका प्यार उन्हें मिल जाए। चाहे जितनी घंटी बजा ले, तेरा घंटा कुछ होने वाला है। टेक्निकली ये लॉन्च नहीं है, री-लॉन्च है। उनको I don't know what he said. He said something about a bell, and I didn't get the gist of what was said. Sorry. तो पहले लव्यापा नाम की फिल्म में लॉन्च किया गया था, लेकिन वो He was saying there's the it wasn't his first launch. I think it was like another second launch of the kid. फिल्म प्रशांत किशोर के बिहार कैंपेन से भी ज्यादा बुरी तरीके से फ्लॉप हुई है, लेकिन उसमें सिल्वर लाइनिंग ये थी कि मूवी इतनी बुरी तरह से फ्लॉप हुई कि किसी को याद ही नहीं है। तो अब आमिर खान पटेल He said the movie was such a flop that no one remembers it. I think he's talking about the first one. I don't know which one he's कर talking सकते हैं about. कि एक दिन फिल्म से उनके बेटे को ऑफिशियली लॉन्च किया जा सकता है। लेकिन जैसे ही इस फिल्म का ट्रेलर निकल के आया, ऑडियंस ने कुछ चीजें नोटिस करनी शुरू की कि इस मूवी की हूबहू सिमिलैरिटी एक दूसरी मूवी से है। Okay, so he had a movie, and then the audience saw the trailer, and they realized that there was something going on in the trailer that was similar to something else. And let's see. थाई फिल्म है जिसका नाम है वन डे, जिससे ये फिल्म को ऑलमोस्ट सीन बाय सीन लगता है कि कॉपी किया गया है। Okay, so he's saying there's a Thai movie called One Day,
and it seems like the movie is copied scene by scene from this movie called One Day, the Thai movie. किस्मत की घंटी है सर, फॉर्चून बेल। दुनिया भर से हारे हुए आशिक इसे बजाकर अपनी किस्मत आजमाते हैं, शायद उनका प्यार उन्हें मिल जाए। और उसके बाद लोगों ने और हमने डिग करना शुरू किया और हम Okay, once they saw this similarity, I guess everyone was digging a little bit more deeper. में कई ऐसे एग्जांपल्स मिले आमिर खान की मूवीज में, आमिर खान की मूवी के सीन्स के गानों। Okay, I want to say something. They call this man the Perfectionist. One of his biggest movies. Okay, so he it's called Gujni. Now Gujni. Let's quickly let's G-A-N-I. I think I've spelt it right. Gajne. I've not spelt it right. Ooh. Come on. Dude. I'm holding a mic and trying to type. Okay, so this is Gujni, yeah? Now this movie isn't the original. It's actually copied off a movie called Memento, directed by what's his name? He's like a famous director. Okay, that's Memento, and that's this is the original. So I could be wrong. Let me just this copied a South Indian movie that copied the original, and this got really popular in not just India, but in Asia. It got really big. Because I remember one of my friends from Hong Kong telling me, "Oh, I've seen this Indian movie," and I'm like, "That's not an original movie," and I really liked it. But this is the original. What's the dude? This guy, is like a proper famous director, like really big. I just can't think of his name. What's his name? Christopher Nolan. That's the dude. Yeah, I think that's one of his first movies ever. But anyway, I just wanted you guys to see that, that this Amir Khan, most famous, was a copy of a copy. Anyway, let's carry on. के जो प्री एग्जिस्टिंग मूवीज से काफी सिमिलर थे। तो आइए एक ऐसे एक्टर जिन्हें परफेक्शनिस्ट कहा जाता है, मिस्टर परफेक्शन के नाम से जाना जाता है, उनकी मूवीज की डार्क अंडरबेली को देखते हैं। I don't know if it's dark. If you don't know, you don't know. But like, if you know, you know. Do you know what I mean? But I wouldn't say it's like. I think. I don't know how to put it. I guess. But I don't know if it's like dark because it doesn't seem malicious. Is what I'm trying to say. हेलो शाम शर्मा शो के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत। Dude, the show didn't even start. There's me thinking he started the show. मैं हूँ सेकुलरिज्म का सीईओ शाम शर्मा और आप सबको एक सेकंड। तो देखिए, there's too much going on. Come on. अपनी जनरेशन के सबसे सेलिब्रेटेड एक्टर्स में से एक है। इनफैक्ट काफी लोग उन्हें अपनी जनरेशन का फाइनेस्ट एक्टर मानते हैं, चाहे वो अपनी रोल के लिए पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म करें, जैसे उन्होंने गजनी में अपने आप को किया था, जैसे उन्होंने दंगल में अपने आप। That's the movie we were talking about. Okay, so this is another one. It's not a copy, but this he for this movie, I could be wrong. I think he went to, what's his name? Jeff Cavalier from Athleen X. Let's see.
C-A. We have. I can't spell, so. There we go. The Athlete X. Let's type in. There we go. Image eyes. Dude, it's showing the odd. This is the English Amir Khan, the boxer. But anyway, I could be okay. So there they are. That's Jeff. He's got a really big YouTube channel. I think he gives like decent advice. He's been in some controversy, but the controversy he's been in, it's like I don't think it's like big. But anyway, that's them two together, just to show you. Do you know what I mean? Like, now this was a how do I put it? This was a big movie, and it had a lot of views in terms of like where. So this was big in Asia, not just in India, in Asia as well. को किया था चाहे लगान हो जिसमें वो एक नया स्किल सीखते हैं प्रोफेशनल Okay, so another movie. This is called Lagan, and this was nominated for an Oscar. It didn't win it, but the movie was long. But it was entertaining. The movie itself was actually quite well made. I've got to give it to this film. I didn't like the one before, what it's called, Dangal, but this one was actually, I thought it was a fun watch. प्रोफेशनली एक क्रिकेटर की तरह उन्होंने ट्रेन किया था अक्षय कुमार जैसे एक्टर जो साल में 25 फिल्में करते हैं उसके कंपैरिजन में आमिर खान साल में या तो एक या मैक्सिमम 2 फिल्में करते हैं ताकि वो अपने आप को कैरेक्टर के अंदर पूरी तरह से डुबा सके I don't know if he's telling the truth that he's saying an actor called Akshay Kumar does 50 movies in a year. I don't know about that. He probably does 2 or 3. But he's saying he's a big name. Whereas Amir Khan will do one movie so he can get into the role of the character. उनकी फिल्म मेकिंग हैबिट्स भी ऐसी हैं कि भाई उनको कंप्लीट फिल्म चाहिए शूटिंग के पहले जो फॉर्मूलेइक रोल्स होते हैं जो बाकी एक्टर्स करते हैं उस तरह के रोल्स को आमिर खान रिजेक्ट करते हैं 3 इडियट्स हो या फिर रंग दे बसंती हो उन मूवी से उन्होंने कमर्शियल और आर्टिस्टिक सिनेमा दोनों को ब्लेंड किया और देखिए ये पार्ट तो सच है वो जनरली प्रेस्टीज प्रोजेक्ट्स को प्रेफर करते हैं सिर्फ बैड एस एक्शन. Okay, so this guy's saying he Amir likes to understand the whole process of the movie. It's not just about like the action packed stuff. He prefers to pick things that have some sort of value to them, not just how do I put it, superficial, like, you know. So it's like all show and no actual characteristic in the movie. हीरो वाली मूवीज नहीं करते जो एक तरह से सलमान खान ने अपने आप को स्टीरियोटाइप कर लिया है. सलमान खान के बारे में अगर आप बात करें तो इतने बड़े स्टार बनने के बाद पिछले ऑलमोस्ट 15-20 सालों से वो एक ही तरह की मूवी रिपीट करते हुए आ रहे हैं जिसमें कि वो एक बैड एस एक्शन हीरो है क्योंकि उनको Okay, this guy he dude, this is so funny. This is Salman Khan. Now he's a big name. He always takes his top off, but the thing about he's probably like 50 or 60. But now he's fat, so they have to green screen his belly. Let me see if I can find it. Salman Khan. Okay. But he's the equivalent of like The Rock, where there's no substance in the actor. I can't find a picture. 6-pack. See, okay, we got it. Yeah.
So I think that's the before, then it's computer generated, and then that's the after. Okay, so we found it at least. But yeah, this guy he just does the same movie over. Like I said, he's The Rock. He's like The Rock, where he likes to just play the action hero, and and has a line. He always has to have like a line. को लगता है कि भाई हम कुछ भी उल्टी कर दे ऑडियंस तो देखने आ ही जाएगी। आमिर खान ने लेकिन एक डिफरेंट पाथ चूज किया है। सलमान खान और अक्षय कुमार जैसे एक्टर्स के कंपैरिजन में उनके रोल्स में काफी वैरायटी है। चाहे अंदाज अपना अपना हो जो एक आउट एंड आउट कॉमेडी है, लगान हो जो कि एक हिस्टोरिकल एपिक है, सरफरोश हो जो कि एक ग्राउंडेड क्राइम थ्रिलर है, गजनी हो जो कि एक रिवेंज मूवी है, मंगल पांडे हो जो एक पीरियड ड्रामा है, और थ्री इडियट्स हो जो एक स्टोन कोल्ड क्लासिक मानी जाती है। He's just saying that Amir Khan does all different types of roles, not just the same old, same old. और कौन भूल सकता है जब उन्होंने ट्रांस कम्युनिटी के लिए ट्रेल ब्लेज की थी बाजी पिक्चर में। तो एक तरह से आमिर खान को इंडिया के डेंजल वॉशिंगटन, लियोनार्डो डिकैप्रियो और डैनियल डे लुइस जैसा माना जाता है, जो बहुत इंटरेस्टिंग स्क्रिप्ट्स ढूंढते हैं, एक्सट्रीमली टैलेंटेड डायरेक्टर्स के साथ काम करते हैं और रोल में अपने आप को पूरी तरह से डुबा देते हैं। लेकिन उनकी फिल्मों को थोड़ा ढंग से टटोलने के पहले एक दो कैवियाट देना जरूरी है। दो इंपॉर्टेंट कैवियाट्स हैं इनकी फिल्मों को डिस्कस करने के पहले जो मैं देना चाहता हूं। पहला कि क्रेडिट वेयर क्रेडिट इज ड्यू। 90s और 2000s में प्रैक्टिकली हर एक फिल्म मेकर और एक्टर ऐसी मूवीज बना रहा था जो किसी न किसी प्रीवियस मूवी से कॉपीड या इंस्पायर्ड थी। चाहे शाहरुख खान हो, चाहे सलमान खान हो, अक्षय कुमार हो, ये सबकी मूवीज में ऐसी या तो पूरी मूवीज रही हैं या ऐसे सीन्स रहे हैं जो एग्जिस्टिंग स्टोरीज या मूवीज से इंस्पायर्ड थे। ऐसा सिर्फ आमिर He's just saying all these guys are doing things that have already been done before. खान ही नहीं कर रहे थे। लेकिन इन एक्टर्स को परफेक्शनिस्ट नहीं कहा जाता, वो सिर्फ आमिर खान को कहा जाता है। तो आमिर खान को नेचुरली हमें एक हायर स्टैंडर्ड पर होल्ड करके रखना चाहिए। और अपने करियर में आमिर खान ने He's just saying if the guy who's a perfectionist should be held at a much higher standard compared to all these other guys, the top guys, but they're more generic top guys. No substance. जेन्युइनली अच्छी मूवीज भी बनाई हैं। फॉर एग्जांपल सरफरोश को अगर आप देखें तो उसमें सटल प्रोपेगेंडा था, लेकिन वो मूवी अच्छी थी। लगान को देखें, अच्छी मूवी थी, बड़ी ब्लॉकबस्टर थी। थ्री इडियट्स को देखें, अच्छी मूवी थी, बड़ी ब्लॉकबस्टर थी। रंग दे बसंती को देखें, अच्छी मूवी थी, बड़ी ब्लॉकबस्टर थी, लेकिन ब्लेटेंट प्रोपेगेंडा इस फिल्म में भरा हुआ था। रंग दे बसंती को जरा एक सेकंड डिस्कस करना चाहता हूँ, थोड़ा सा एक डिटूर लेना चाहता हूं। मैंने इस मूवी को इसकी ग्रेट मूवीज में इसलिए इंक्लूड किया है क्योंकि इस मूवी ने एक पूरी मिलेनियल जनरेशन को वन शॉट करके ब्रेन वॉश कर दिया था। बेसिकली ये जो ब्लैक पिलिंग होती है। Okay, I don't understand all this pill stuff. So he's saying one of his movies has brainwashed an entire generation. Okay, that's news to me. ये ना, ये मिलेनियल्स को रंग दे बसंती ने सबसे पहले दिखाई थी। इन्होंने किसी चेंज के लिए होप करना अनकूल बना दिया था कि भाई इस देश का तो कुछ भी नहीं हो सकता। ये मेंटालिटी मिलेनियल्स के दिमाग में रंग दे बसंती ने डाली कि इंडियन पॉलिटिक्स में मीनिंगफुल चेंज सिर्फ वायलेंट रेवोल्यूशन से आ सकता है, पॉलिटिशियंस के खून बहाने से आ सकता है। बेसिकली इंडियन Oh, okay. So he's saying the message behind the movie was that only violence can be something that can make a change in politics. पॉलिटिशियंस को ब्रिटिश इन्वेडर्स और कॉलोनाइजर के बराबर कर दिया था, जिनको देश की कोई परवाह नहीं है। अब देखिए इसमें ये पूरी तरह से They were seeing the movie like the British colonizers. गलत नहीं थे क्योंकि उस समय कांग्रेस पार्टी की गवर्नमेंट थी और कांग्रेस एक तरह से ब्रिटिश राज जैसी ही थी। उन्हें लगता था कि उनका भाई इंडिया पे रूल करना डिवाइन राइट है हमेशा के लिए। और उनके 65 सालों के रूल में 40% इंडियंस के पास टॉयलेट्स नहीं थे, खुले में हागा करते थे, रोड कनेक्टिविटी नहीं थी, इंटरनेट नहीं थी, पानी नहीं था, बैंक अकाउंट्स तक नहीं थे, कुकिंग गैस तक नहीं थे लोगों के पास। इंडिया के 1/3 डिस्ट्रिक्ट्स नक्सल ऑक्यूपेशन में थे और गवर्नमेंट कुछ भी नहीं कर पा रही थी। आतंकवादी अटैक्स इतने फ्रीक्वेंटली होते थे जितना फ्रीक्वेंटली पाकिस्तान IMF से जाके भीख मांगता है। तो He just said a lot of stats. I'm not going to go through them. No, and I don't know if how accurate they are. They're probably... He probably knows more than me.
but he said there were terror attacks, this, that. But I don't know what he's trying to say. That's the thing. ऑब्वियसली लोग होपलेस फील कर रहे थे उस समय में, लेकिन वायलेंट रेवोल्यूशन प्रमोट करना और कंप्लीट ब्लैक पिलिंग प्रमोट करना ये भी गलत है. Okay, he's just saying the promotion of these the violent side of things is bad. Before he was giving stats like people didn't have toilets, they didn't have internet, they didn't have I guess even houses. Do you know what I mean? Like, he didn't say that, but he was saying like 40%, which is like nearly half of the country. Do you know what I mean? And he said like the people take dumps outside. Dumps, you know what I mean by dumps, because they don't have the facilities to do anything. Yeah. अल्टीमेटली देखिए क्या हुआ फिर. इंडिया के लोगों ने खुद डिसाइड किया. इंडिया के लोगों ने मैटर अपने हाथ. By the way, I'm sorry if I get anything wrong. Just say you got it wrong. That's all I can say. I'm trying. हाथ में लिया, लेकिन बंदूक लेके नहीं, इलेक्टोरली डेमोक्रेटिक प्रोसेस का इस्तेमाल करके उन्होंने गवर्नमेंट बदल दी जब एक अच्छा अल्टरनेटिव आया. और 2007 का इंडिया और आज के इंडिया में बहुत बड़ा फर्क है. लेकिन जो उस फिल्म ने मिलेनियल्स को ब्रेन वॉशिंग और ब्लैक पिलिंग सिखाई थी, उसके इफेक्ट्स हम आज. He's saying India is totally different from 20 years ago. भी देख सकते हैं. लेकिन अब आइए जरा आमिर खान का जो मिस्टर परफेक्शन वाला एक पीआर क्रिएट किया गया है उसको एक्सप्लोर करते हैं उनकी मूवीज को देखकर. 1995 में आमिर खान की एक मूवी आई थी, अकेले हम अकेले तुम. उसका एक सीन टू सीन कंपैरिजन देखिए. क्या कर रहे हो सुनील? चलो चुपचाप खाना खाओ. सुनील, अगर वो आइसक्रीम तुमने खाई तो बहुत बुरा होगा. तुम समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? सुनील! Why not give the movie that it's copying? That's Dustin Hoffman, by the way. I don't know what the movie is. It would be much better for context. And you are in very, very, very big trouble. Don't you dare go anywhere beyond that. Put it down right now. I am not going to say it again. I am not going to say it again. दोनों में बस आइसक्रीम के फ्लेवर का फर्क है. 2000 में आमिर खान की फिल्म आई थी मेला, उसमें ये सीन देखिए. और guess he's showing another comparison, but it'd be good to see what movie that was. आप मुझे बताइए कि क्या इस सीन में 1994 के डम एंड डम्बर से कोई सिमिलैरिटीज है? I gave the movie this time, Dumb and Dumber, yeah. भाई पूमा और पुम्बा वाला हालत बना रखी है यहाँ पे. तो अब देखिए, भले ही ये मूवी जनरेशनल फ्लॉप रही हो, लेकिन मुझे लगा Let me just say this. This is nothing compared to like how much if you've seen Western movies. And when I say it, I don't just mean Western movies. I'm talking about Asian movies as well, excluding Bollywood. And you know the Bollywood industry, you will notice so much copyright infringement. You'd be like, wow. And when I say that, I'm not just talking about the movies themselves, but the music as well. There is so much like music where you're like, oh, this is a good track, and then years later you'll hear something and you're like, there's so many tracks that like they've gutted it. Anyway, कि जितना भी क्रिंज है इस मूवी में, कम से कम वो ओरिजिनल तो है. I किशन बिंदास नॉन मैट्रिक पास. My show होइंग सुपर हिट. दाल रोटी भूलिंग. Now you going? माल जमा करेंग and I come coming. माल भरेंग and ट्रक शुरू करेंग. You shucking me? Always shucking. सौतेली माँ. मतलब स्टेपनी मदर.
आमिर खान की जो 3 इडियट्स फिल्म है उसमें ये जो आइकॉनिक सीन है ये भी कॉपीड है। 1991 में आमिर खान की फिल्म आई थी दिल है के मानता नहीं। ये मूवी 1934 की इट हैपेंड वन नाइट की कॉपी मानी जाती है। फिर उसके साथ एक और उनकी मूवी निकल के आई थी जो बहुत पॉपुलर थी 90s में, जो जीता वही सिकंदर, और इस फिल्म को भी हॉलीवुड की ब्रेकिंग अवे फिल्म का पूरा कॉपी माना जाता है। Oh, okay, I didn't know that. I did not know that. Because okay, so I've got a I've got a background in like cycling in terms of like I cycle a lot, like more than the average person. So I've seen this movie and I did not know that. Okay, okay, so that's a copy. I did not know that. So it's like what is it? It's like college students that do like cycle racing. सेम ब्रेकिंग अवे वाली कहानी है। स्नॉबिश स्कूल जहां अमीर बच्चे पढ़ते हैं, गरीब मोहल्ले का लड़का जो स्कूल में फिट नहीं कर। Yeah, so he's saying that it's a school where there's the rich kids against the poor kids. Yeah. स्नॉब स्कूल की लड़की पे उसका क्रश आ जाता है, खुद को स्टूडेंट बता के वहां पे। He's got a snob school, so he's he's got a bit of a crush on the girl from the rich school. घुस जाता है ताकि उसके पास आ सके। लड़की को सच पता चल जाता है और वो उसको छोड़ के चली जाती है। Then the girl finds out he's poor and goodbye girl. स्कूल में साइकिल रेस होती है जिसमें दूसरी टीम डर्टी ट्रिक्स खेलती है। Play dirty tricks. हीरो अपने 3 दोस्तों के साथ फिर रेस जीतता है और उसको अल्टीमेट विक्ट्री मिलती है। सेम कहानी बस। Hold on. I don't know I've not seen this movie, but what was it? I think it's his brother that's meant to be the racer, but then he races instead. I could be wrong. I've not. It's been like a lot. It's been decades since I saw that movie. बस सेकंड जो लेफ्ट ट्रैक है और जो भाई वाला एंगल है वो मिसिंग है। 1993 की फिल्म आती है हम है राही प्यार के, जो कि 1958 के हाउस बोट फिल्म से काफी इंस्पायर्ड मानी जाती है। 1995 में उनकी फिल्म आती है आतंक ही आतंक, जो कि बेसिकली इंडिया की द गॉडफादर मानी जाती है, और वो फिल्म भी एक जनरेशनल फ्लॉप। Okay, so they made a Godfather copy as well. Dude, the guy looked cheesy in that film. होती है। फिर 1999 में उनकी एक फिल्म आती है मन, जो कि 1957 की कल्ट मूवी एन अफेयर टू रिमेंबर का बिल्कुल कॉपी मानी जाती है। गजनी फिल्म जो है वो तो थैंकफुली आमिर खान ने माना था कि ये देखिए साउथ की जो गजनी मूवी है उसका रीमेक है। Dude, he's not even getting to the original source. That's not even like I said, I didn't even. Okay, so he copied the South movie, but the South movie was a copy of Memento. लेकिन इस फिल्म में भी majority of scenes जो है वो क्रिस्टोफर नोलन के मोमेंटो फिल्म से इंस्पायर्ड है। Inspired, dude. It's what do you mean inspired? It's copied. It's totally copied, not inspired. इनफैक्ट क्रिस्टोफर नोलन को जब गजनी फिल्म के बारे में पता चला तो अलेजिडली वो काफी नाराज भी थे कि ना मुझसे बात हुई, ना मुझको कोई क्रेडिट दिया गया, कुछ भी नहीं। फिर आती है आमिर खान। Okay, so he's saying Christopher Nolan was actually quite upset when he found out that the movie was made because he wasn't credited in any sort of way. की फिल्म फना, इस मूवी का सेकंड हाफ it is literally a copy of the movie. Do you know what I mean? Like it's like literally a copy. So I don't understand why not just credit the dude who's made the original. भी 1981 की Even the South movie should do that. It's literally a copy. It's a copy. It's not. Look, so the movie itself, it's not like entertaining in terms of how they've made it in Bollywood, because they sort of like jazz it up, whereas the original is raw. Eye of the Needle से पूरी तरह से इंस्पायर्ड मानी जाती है। Well, it had Amir and Kajol, and this film was inspired from the 1981 spy thriller Eye of the Needle, starring Donald Sutherland. Eye of the Needle में एक स्पाई है एक आइलैंड पर जहाँ सिर्फ एक केयरटेकर और एक फैमिली है बस। कपल है अपने बेटे के साथ और हस्बैंड डिसेबल्ड है। वाइफ एंड द स्पाई स्टार्ट हैविंग एन अफेयर और शी कैचेस अप टू हिम कि क्या क्या चल रहा है, एंड देन शी ट्राइज टू स्टॉप हिम।
same to same as the second half of Fana. लेकिन ये पूरा कॉपी है, इसको कहना भी गलत होगा, बिकॉज आमिर खान ने जो आतंकवादी को विक्टिम दिखाने वाला एंगल रखा है वो बिल्कुल आमिर खान के लिए ओरिजिनल है। अब आपको पता नहीं, याद होगा कि नहीं, कि उनकी एक मूवी He's saying he didn't copy it fully. क्या थी ये तो ना मैं जानता हूँ ना आप जानते हैं, और ऑनेस्टली मुझे लगता है कि आमिर खान भी नहीं जानते कि मूवी थी क्या। कुछ लोग कह रहे थे कि इस मूवी में भी जो आमिर खान के कैरेक्टर हैं, जो एक वाइब है, एस्थेटिक्स हैं, वो पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन से काफी इंस्पायर्ड थे। So he's the Thugs of Hindustan was I guess loosely based on Pirates of the Caribbean. He says the vibes and stuff. I would say inspired. बट अगेन ये फिल्म इतनी कंफ्यूजिंग है कि इसको हम इंस्पिरेशन में नहीं बोल सकते। ये क्या फिल्म है किसी को नहीं पता। तो Okay, so he's saying the opposite of me. He's saying not inspired. ये तो हुई आमिर खान का अपना करियर। इसके बाद देखिए इनके प्रोडक्शन हाउस की बात करते हैं, क्योंकि आप कह सकते हैं कि चलिए भाई आमिर खान जो थे वो दूसरों की फिल्मों में काम कर रहे थे, दूसरों की प्रोडक्शन हाउसेस के लिए काम कर रहे थे। Okay, so this guy's saying that it's not actually Amir's fault because he was doing work for other people and it wasn't actually his production company that was doing all these movies. दूसरे डायरेक्टर्स के कहने पे काम कर रहे थे, तो उनके पास उतनी शायद क्रिएटिव इनपुट नहीं थी, तो बहुत सारी इंस्पायर्ड फिल्मों में इन्होंने काम किया। अब इन्होंने अपना खुद का एक प्रोडक्शन हाउस बना लिया है। अब इस प्रोडक्शन हाउस में तो इनके पास पूरी तरह से टॉप टू बॉटम क्रिएटिव कंट्रोल है। तो इनके पास Okay, so now he's saying, okay, so that was then, now this is now, and now that he's got his own production company, पूरी आजादी है कि he's got all the freedom. अपनी खुद की इनोवेशन करके, अपनी खुद की क्रिएटिविटी का इस्तेमाल करके ये नई बिल्कुल ओरिजिनल फिल्में बना सके। So now he can make original movies, dude. Oh, I was gonna say I didn't see that just by looking at this scene. I knew it was Forrest Gump. I didn't even see the writing. I've probably seen this movie. And when people say I've seen this movie hundreds of times, I'm not exaggerating. I've probably seen this movie way over 20 times. Under 100, but way over 20 times. And I've got the soundtrack, so it's not. I'm not one of these people who say I've seen this movie thousands of times. No. Those people are like, when I say I've seen this movie, like, I mean I've actually seen this movie way over 20 times. I bought it on DVD and I've seen it too many times. But anyway, this was in 1994. This was released. That's 2022. It's called do you know what? This scene, I already know it's the Run Forest Run scene. I've seen it copied in so many things. Run Forest Run. में आती है उनकी फिल्में जैसे कि लाल सिंह चड्ढा, जो कि ऑफिशियली फॉरेस्ट गंप नाम की फिल्म का रीमेक है। This scene is funny because he grows up whilst watching it, and there's a little bit of cartoon effect because he leaves like a smoke trail behind. Because I always like, how did he get so far? And then he ends up like jumping over like this big fence in a far shot. Again, not an original idea. Again, जो ओरिजिनलिटी आमिर खान से हमको अक्सर देखने को मिलती है, वो होती है आतंकवाद को व्हाइट वॉश करना। पाकिस्तानी आतंकवादी की सॉफ्ट साइड दिखाने की कोशिश करना। मैंने तुम्हें मारने की कोशिश की। I don't know. Atamwadi, that word means terrorist. So he's saying they're trying to make you sympathise for the terrorist. I think that's what he meant. और तुमने मुझे बचाने की। दुश्मन देश सोच कर आया था। You already know from like
this soft music that it's meant to be an emotional scene. दोस्त मिल गया. I found a तूने friend. मुझे तो बचा लिया. You saved me. पर वहाँ अब भी मलेरिया फैला हुआ है. But something about malaria. मुझ जैसे कितनों को बहकाया जा रहा है. I don't know what the word beg दुश्मनी means. सिखाई जा रही है. ले. मैं वापस जाके एक स्कूल खोलना चाहता हूँ. I want to go back and open a school. वहाँ पर I think he might, I don't know, I think he might have special needs, the way like he's acting. बच्चों को तुम्हारे ऐसे दोस्तों के बारे में सिखाना चाहता हूँ. फिर इस फिल्म में अगली मूवी आती है लापता लेडीज, जिसको बहुत क्रिटिकल और पब्लिक अक्लेम भी मिला था. There's another movie called Lapata Lady. अनुपमा चोपड़ा जैसे जो क्रिटिक्स हैं, जो धुरंधर को घटिया मूवी और प्रोपेगेंडा बोलते हैं, वो लापता लेडीज की बहुत तारीफ कर रहे थे. There's such sweetness in his longing for his Lapata wife. And that scene in which he tells Pool how he feels is just superb. Lapata ladies made me smile. It also made me tear up for the strength and the struggles of women everywhere. एंड देन ऐसे क्रिटिक्स की वजह से इस फिल्म को ऑस्कर्स के लिए नॉमिनेट भी कर दिया गया था, लेकिन ये ऑस्कर्स के फाइनल नॉमिनेशन के आसपास भी नहीं है. और बाद में पता चलता है कि ये फिल्म जो है, It was I think he said it was nominated, but it was like nowhere near getting nominated, something like that. Like I said, I'm trying. ये भी एक दूसरी फिल्म से काफी इंस्पायर्ड है. इस फिल्म का नाम है बुरका सिटी. Okay, Lapata Lady is inspired by Burqa City. I don't know where Burqa City is made. Okay, let's carry on. Sorry. ما نقدر كاع نشوف فيك. نوع نشوف فيك. الله يخليك. تعتقد الصباح تعقد على زوجتي وحجوج. هي اخرى. لا ماشي. جاي. बुरका सिटी के जो डायरेक्टर हैं फब्रीस ब्राक, वो काफी शॉक्ड भी हुए थे लापता लेडीज देख के, और उन्होंने स्पेसिफिकली कहा था कि वो शॉक्ड है कि उनकी फिल्म में और लापता लेडीज में कितने सिमिलैरिटीज हैं. वेल्ड ब्राइड का मिस्टेकन एक्सचेंज सेम है, हस्बैंड फोटो लेकर ढूंढ रहा है ये सेम है, पुलिस स्टेशन के जो बीट्स हैं वो बहुत सिमिलर है, कॉन्ट्रास्टिंग हस्बैंड्स की जो इमेजेस है वो काफी सेम है, एक औरत एक अब्यूसिव मैरिज को छोड़ रही है वो भी बहुत सिमिलर है. तो It sounds like it's just a copy. When they make these movies, it's generally, I guess, because certain movies don't reach the Indian cinema, so they wouldn't know about these movies. तो सिर्फ ब्रॉड प्रीमिस की सिमिलैरिटी नहीं है, लेकिन मूवी में जो कई बीट्स भी हैं, सीन कंस्ट्रक्शन जो है, कैरेक्टर्स जो है, उनमें भी बहुत सारी सिमिलैरिटीज हैं. लेकिन ऑफिशियल पोजीशन लापता लेडीज के मेकर्स की ये है कि भाई हमने इस फिल्म को प्री 2019 में स्क्रिप्ट रजिस्टर कर ली थी, हमारा कोई इंस्पिरेशन नहीं है इस फिल्म से. अब आपने इन दोनों मूवीज की स्टोरी देखी है, सीन बाय सीन कंपैरिजन भी देखे हैं, आप ही डिसाइड कर लीजिए. फिर इनकी एक और मूवी आती है सितारे जमीन पे, जो कि अगेन एक ऑफिशियल रीमेक है कैंपियोनेस नाम की एक स्पेनिश मूवी की. अपने सीनियर पर हल्ला बोल. Okay, so this one's what's it called? Okay, let's see. It's called Campio. Is it not Champions? Champions. Okay, that's the original. What's this one called? Sitar Zameen Per. Sitare. What does that mean? I don't know what that word means. Sitar. Okay, anyway. Zameen means something on the floor, the ground, something like that. इनके टैलेंट का सही उपयोग करना चाहिए. प्रशिक्षित करने का निर्देश दिया जाता है. मैडम 3 महीने तक पागलों को सिखाऊंगा. लेकिन अगेन अगर आप इस ट्रेलर को देखेंगे तो शॉट बाय शॉट बिल्कुल सेम है. असिस्टेंट कोच ने अपने सीनियर पर हल्ला बोल दिया. डिसेबल लोगों की एक बास्केटबॉल टीम को प्रशिक्षित करने का निर्देश. Before he had this one at the bottom and this one at the top, then he shouldn't have turned it around. Should have just left it where it was. Sorry, it's inconsistent, that's all.
निर्देश दिया जाता है। चाबी चाहिए। और फिर आती है उनके बेटे को रीलॉन्च करने की कोशिश एक दिन फिल्म से, जो कि अगेन एक थाई मूवी वन डे से बहुत ही ज्यादा इंस्पायर्ड लगती है। वो क्या? किस्मत की घंटी है सर, फॉर्चून बेल। What is it? Kismat. He said it's the. Doesn't Kismat mean like luck or something like that? Like bell of luck or something. I can't think of the word for Kismat right now. I'll probably remember in like 2-3 days. दुनिया भर से हारे हुए आशिक से बजाकर अपनी किस्मत आजमाते हैं, शायद उनका प्यार उन्हें मिल जाए। इनफैक्ट सिर्फ स्टोरी इंस्पायर्ड नहीं है, लोकेशन भी इंस्पायर्ड है। जिस लोकेशन पे उस फिल्म को शूट किया गया था, उसी लोकेशन पे लगता है कि एक दिन फिल्म को भी शूट किया गया। लोकेशन ढूंढने में भी इन्होंने ओरिजिनलिटी नहीं दिखाई, मतलब नाम में भी ओरिजिनलिटी नहीं दिखाई है। वन डे उस फिल्म का नाम था खाली। Okay, he's saying that it's so unoriginal that they use the same location. They if you look at the screen, it says one day, and one day translates into ek din. Ek means one, and day means din. ट्रांसलेट करके एक दिन कर दिया। अब मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि कब आमिर खान प्रोडक्शंस क्विंटन टैरेंटिनो के इंग्लोरियस बास्टर्ड्स को रीमेक करेंगे, जिसका नाम वो रखेंगे जलील हरामजादे। अब इस फिल्म के लिए भी कोई रिलायबल ट्रेड रिपोर्ट या प्रोड्यूसर स्टेटमेंट नहीं है, ये एक्सप्लिसिटली कहते हुए कि आमिर खान प्रोडक्शंस ने ऑफिशियल रीमेक राइट्स इस वन डे फिल्म के एक्वायर किए हैं। एक रिपोर्ट ने तो ये भी कहा कि वो श्योर नहीं है कि ये रीमेक है या नहीं है। तो नोबडी नोस के एक दिन बनाने के लिए इस वन डे फिल्म के ऑफिशियल राइट्स एक्वायर किए गए थे या नहीं। एटलीस्ट अभी तक इस पे कोई पब्लिक इंफॉर्मेशन नहीं अवेलेबल। You're saying do they or do they not have the rights for that movie called One Day? और मामला सिर्फ फिल्मों पे खत्म नहीं होता, इनकी फिल्मों में गाने भी। तिनक तिन ताना जो गाना है मन फिल्म का, वो इंडोनेशियन ट्रैक सेदांग सेदांग साजा से कॉपी माना जाता है। I told you about the music before. Here we go. I don't even know about any of this stuff because I don't listen to Indian music. चाहा है तुमको तमिल गाने एधो उरु पाटू से इंस्पायर्ड माना जाता है। चाहा है तुझको चाहूंगा हरदम ஒரு பாட்டு என் காதில் கேட்கும்। फिल्म अकेले हम अकेले तुम में भी। Oh, there's a lot of music that's copied from the South movies as well, and I think it's probably vice versa where the South. So okay, here's something a little bit odd, but the South movies are regarded separate from the Bollywood movies. They've got their own. They've got like a really big production line. Their movies are very like if you think Bollywood movies are like polished, shiny, and over the top, the South movies are way more over the top than the Bollywood movies. Like way more. Like you see flying cars in those sort of movies. That's how over the top. But anyway, let's carry on. ये ऐसे मल्टीपल एग्जांपल्स हैं। दिल मेरा चुराया क्यों को जॉर्ज माइकल के केयरलेस विस्पर से इंस्पायर्ड माना जाता है। ऐसा जख्म दिया है डीप पर्पल के चाइल्ड इन टाइम से इंस्पायर्ड माना जाता है। मुझे नींद ना आए को यूके बेस्ड बैंड अलाप के ट्रैक। Dude, I didn't even know all this, and I sort of knew about it, if you know what I mean. So I told you that like the music, if you thought the movies were like copied, the music is like over the top, crazy. चुन्नी उड़ उड़ जाए से इंस्पायर्ड माना जाता है। नींद चुराई मेरी का रिजेम्बलेंस सेंडिंग ऑल माय लव से जोड़ा जाता है। जाने मुझे क्या हुआ के बारे में काफी लोग कहते हैं कि उसमें लुडविग वैन बीथोवन के क्लासिक पीस फूर एलिस का इन्फ्लुएंस सुनाई पड़ा। Okay, so he's saying it's taken off something off Beethoven. The thing about all the orchestral like classical music is all of that stuff is in public domain, if I'm not wrong. So all of that is fair game. So you've got the right to do anything you want to do to like Beethoven's music, I think, because his stuff should be in public domain by now in terms of like, so you can sell the music and make money off it
if anything is in public domain without having any sort of consequences. पड़ता है अगेन मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि मैं समझता हूँ बहुत सारे एक्टर्स हैं बॉलीवुड में इंडियन सिनेमा में इन जनरल जिन्होंने प्री एग्जिस्टिंग मूवीज से इंस्पायर्ड मूवीज बनाई हैं लेकिन आमिर खान का पीआर एज अ मिस्टर परफेक्शनिस्ट किया गया है कि वो अपने जनरेशन के सबसे परफेक्शन सबसे क्रिएटिव सबसे इनोवेटिव एक्टर हैं तो फिर मुझे समझ he's just saying that if he's got the title of being perfectionist, then समझ में नहीं आता कि इनकी इतनी सारी मूवीज जो हैं वो प्री एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी से इंस्पायर्ड क्यों हैं डेंजल he's saying why is all his stuff inspired by other movies if he's a perfectionist. वॉशिंगटन लियोनार्डो डिकैप्रियो डैनियल डे लुइस इन पे पुरानी मूवीज को सिर्फ रीगर्जिटेट करने के इतने एक्यूजेशंस नहीं लगते जितने आमिर खान पे लगते हैं और सबसे He's saying that all of those three actors that they showed don't have accusations of being in movies that have been copied, unlike Amir. इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब मिस्टर परफेक्शनिस्ट ने अपने खुद का स्टूडियो सेटअप किया था ताकि वो मूवीज बनाए जो वो बनाना चाहते हैं तो उनकी ज्यादातर मूवीज या तो ऑफिशियल रीमेक्स हैं या दूसरी प्री एग्जिस्टिंग मूवीज की कंप्लीट कॉपीज हैं तो ये कैसा परफेक्शनिज्म है यार तो और आमिर खान के जो मिस्टर परफेक्शनिस्ट वाला saying what sort of perfectionist copies shit. पीआर तब तक काम कर रहा था जब तक आदित्य धार और एसएस राजामौली जैसे गॉड टियर टैलेंट्स इंडस्ट्री में नहीं आए अब ये लोग आ गए हैं और इन्होंने एक ऐसा बेंचमार्क सेट किया है कि इंडियन सिनेमा ऑलमोस्ट हमेशा के लिए बदल गया है अब आमिर खान का ये परफेक्शनिस्ट पीआर सिर्फ पीआर पे काम नहीं चलेगा प्री एग्जिस्टिंग मूवीज को अडेप्ट करके उसको हाई आर्ट कहना अब नहीं चलेगा हाँ लेट 90s और 2000 He's saying there's other guys in the game now who are sort of batting further than Amir has, and Amir's perfectionist persona is based on PR, like as in his how do I put it? He's like probably the agency that advertises him. में उन्होंने अच्छी मूवीज बनाई थी जो आज भी क्लासिक्स मानी जाती हैं लेकिन पिछले 15 सालों में दंगल को छोड़कर ऐसी कितनी मूवीज हैं जो जेन्युइनली इनके लिए मिस्टर परफेक्शनिस्ट का टाइटल जस्टिफाई करें और दूसरी मूवीज को रीमेक करने की प्रॉब्लम तो है ही दूसरी प्रॉब्लम है इनकी मूवीज में जो प्रोपेगेंडा है कि रंग दे बसंती में कैसा प्रोपेगेंडा था ये हमने बात की ही थी कि कैसे उसमें एक घटिया कैरेक्टर था हिंदुत्व वाला और वो तभी रिडीम हुआ जब उसने अपना हिंदुत्व आइडियोलॉजी छोड़ दी सरफरोश में जबरदस्त So he's saying there was I think Hindutva means like the extremist Hindus. And he's saying like the character in that movie was redeemed when he left the extremist sort of club, I guess. गंगा जमुना तहजीब घुसाने की कोशिश की गई और दिखाया गया कि कैसे मुसलमानों के खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन होता है पीके में तो हमने देखा ही है कि जो 85% टू 90% सैटायर है वो सिर्फ हिंदू प्रैक्टिसेस पे है क्रिश्चियंस और मुस्लिम्स को उस तरह से टच भी नहीं किया है जिस तरह से ओपनली हिंदू प्रैक्टिसेस को हिंदू देवी देवताओं को मॉक किया गया है अटैक किया गया है क्या इसमें ये दिखा सकते हैं कि पैगंबर साहब भाग रहे हैं जिस तरह से Okay, so PK is a movie about an alien. He's saying he only touched on the like the Hindu side and not like the any other religions like the Christians or the Muslims. But I don't know if that's true. I've seen that movie and I don't think it's a big thing. I don't think it's a big thing. Do you know what I mean? That the movie was actually fun to watch. So it's not a major thing, to be honest. So what? Who cares? Does that don't matter? बट अल्टीमेटली मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या आपको लगता है कि आमिर खान अपने करियर में मिस्टर परफेक्शन का टाइटल डिजर्व करते हैं या फिर क्या आपको लगता है कि उनका जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो रीमेक्स पे काफी बेस्ड रहा है और इस वजह से उनको ये टाइटल नहीं दिया जा सकता आप इस डिबेट में किस तरफ लैंड करते हैं नीचे Ooh, I don't know what to make of it because
I guess he doesn't. He's saying, does he deserve the title of Mr. Perfectionist? And I would say no. Yeah, there we go. No. Anyway, that was like a interesting watch and something cool to understand and learn from. So yeah, that's it for that. And that was a channel called the Sham Sharma Show. Yeah, thank you guys. Take care. Have fun.